let's discuss May-June 2020 variance 42. Iron tablets are used to treat iron deficiency in the body. Iron tablets contain iron 2 ions. A student does a series of titration with aqueous potassium magnate 7 to determine the percentage of iron in some iron tablets. Diagrams of the sum of the apparatus student uses are shown. Name the three pieces of apparatus. Obviously ये ब्यूरिट है, ये मेजरिंग सिलेंडर है, ये पिपेट है आपके पास. तो A जो है वो ब्यूरिट हो जाएगा आपके पास. B जो है वो मेजरिंग सिलेंडर है आपके पास. और C जो है वो पिपेट है. The student records the total mass of 5 iron tablets, crushes the tablet, dissolves them in distilled water, and makes the solution up to 250 cm3. That's a very important statement. Use apparatus C, yani volumetric flask, yani pipette, to transfer 25 cm3 of the solution into the conical flask. Yani Fe2 plus ions are found in the conical flask. Ki matter karti hai baat. Use apparatus B, that is measuring cylinder. 10 cm3 of dilute sulfuric acid is added into the conical flask. जब आप याद रखिएगा, जब आप सल्फ्यूरिक, वैसे तो इसका कलर ग्रीन होता है, लेकिन जब आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो इट टर्न्स इनटू कलरलेस. तो बेसिकली Fe2 plus ions has a green solution. When you add dilute sulfuric acid in it, it turns to colorless. तो conical flask before titration colorless होगी. ठीक है, ये याद रखना. Fill apparatus A with 0.005 mole per dm cube KMnO4, यानी ब्यूरेट के अंदर KMnO4 है. Titrate the solution of Fe2 plus ions with KMnO4 until the first permanent pink color is seen in the conical flask. Repeat the titration 3 times. Okay. The equation for the reaction is shown. ये equation important examiner ने आपको खुद से दे दी है. वो कह रहे हैं suggest why dilute sulfuric acid is added to the conical flask. H2SO4 है. It is used as an acid because it provides hydrogen ion in the aqueous medium. Because it provides hydrogen ion in the solution. Give the formula of the ion responsible for the pink color seen at the end point. आप जानते हैं मैग्नेट 7 आयंस का पिंक कलर होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे MnO4 negative pink color. The diagram shows part of apparatus A with the liquid level at the beginning and at the end of titration. ठीक है, ये 0.567.7 है ये. और ये बेटा 17.1, यानी ये है 17.1. डिफरेंस यहाँ से कितना आ जाएगा 17.2, यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा 16.4. अगर आपके पास ये 16.9 है और डिफरेंस 16.7 है, तो जाहिर सी बात है फाइनल ब्यूरिट रीडिंग 0.2 होगी. यहाँ पर बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सेकंड और फोर्थ होगा. यूज द टिक वैल्यू टू कैलकुलेट द एवरेज. तो ये हो जाएगा 16.9 प्लस 16.7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 16.8 सेंटीमीटर क्यूब. सही है. A second student does another series of titration using the same method and 0.005 KMnO4. This student obtains an average volume of 16.9 cm3. Calculate the number of moles of MnO4 used by the second student. बेटा 1000 cm3 है आपके पास, उसमें मोल्स है 0.005, और जो सेकंड टाइट्रेशन में वैल्यू यूज की थी 16.9 cm3 थी,
बताइए उसमें मोल्स कितने हो जाएंगे आपके पास? ये हो जाएगा 0.000845। फिर वो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 25 cm क्यूब सैंपल ऑफ सॉल्यूशन। सो बेटा आपके पास MnO4 नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है। आयरन 2 आयंस हैं, ये 1:5 का रेशियो है। अगर ये 0.1234845 है तो बताइए ये कितना होगा? तो मल्टीप्लाई बाय 5 होकर मिल जाएगा आपको। 16.9 into 0.005 divided by 1000. 5 तो ये हो जाएगा 4 into 4 4 point something 4 point ये हो जाएगा 0.00042225 moles. Calculate the total mass of iron 2 ions in the 5 tablets. बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, total mass of iron 2 ions in the 5 tablets. आप नोट कीजिएगा जरा, आपने 5 टैबलेट्स का जो मास था ना वो 250 cm क्यूब में डिसॉल्व किया था, इफ यू रिमेंबर। ये देखिए, देख रहे हैं आप, आपने 5 आयरन टैबलेट्स ली थी और उनको आपने डिसॉल्व किया था 250 cm क्यूब, फिर उसमें से आपने 25 cm क्यूब निकाला। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सबसे पहले तो ये डिटरमिन करूंगा कि 25 cm क्यूब में 0.00042225 मोल्स हैं, 250 में कितने होंगे? तो ये हो जाएगा 0.004225 मोल्स। अब मैं मास कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मास ऑफ Fe2 प्लस कितना हो जाएगा? 0.004225 इंटू 56। आयरन का मास गिवन है क्वेश्चन में, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.004225 into 56, so it's going to be 0.2366। सही है, या आपके पास मास आ जाएगा कैलकुलेशन कितनी गड़बड़ नहीं हुई, एक मिनट। 0.00245 ठीक है, multiply by 250 divided by 25 minus 3 6 ये हो जाएगा 0.2366 ग्राम। वो कह रहे हैं टोटल मास ऑफ 5 टैबलेट्स इज 1.83 ग्राम। Calculate the percentage by mass of iron in the temples, 3 significant figures. So beta, percentage by mass of iron 2 ions है, तो आप क्या लोगे? mass of iron 2 ions over mass of tablet 5 tablets into 100। mass of iron आपने कितना निकाला है? 0.2366। इसको डिवाइड कर दो, टोटल मास है which is 1.83, ये गिवन है, into 100 हो जाएगा 0.2366 divided by 1.83 into 100।
It's going to be 12.92%. ठीक है जनाब. A solution contain one cation and two different anions. So one cation और two different anions. ठीक है. Complete the table. Name any gas form to the portion of the solution in a boiling tube at aqueous sodium hydroxide. The solution contain Fe2 plus ions. Observation क्या होगी? Green precipitates. ठीक है. फिर उसके बाद वो कह रहे हैं to the portion of the solution in a test tube at dilute nitric acid until no more change is seen. A gas is evolved that turns lime water milky, meaning carbonate ions present. ठीक है. And obviously यहाँ carbon dioxide gas release हो रही है. उन्होंने कहा था कोई भी गैस release हो उसका नाम मेंशन करो. Add aqueous barium nitrate, white precipitates form the bitter sulfate ions present. ठीक है. इसके बाद अलर्ट रहना. Calcium ammonium nitrate is water soluble compound. Describe a series of tests and the observation to identify calcium ion, ammonium ion, and nitrate ion. Your description will need to explain how to prevent ammonium ions interfering with the test for nitrate ions. बेटा मैं सबसे पहले क्या करूंगा? कैल्शियम आयन को टेस्ट करूंगा. लेकिन टेस्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा? इस सॉल्ट को डिसॉल्व करूंगा डिस्टिल्ड वाटर में, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है. तो डिसॉल्व कैल्शियम ammonium nitrate in distilled water. अब डिस्टिल्ड वाटर बन जाएगा तो फिर टेस्ट करूंगा मैं. टेस्ट फॉर कैल्शियम आयन. तो मैं लूंगा एड NaOH, white precipitates are formed. On heating, white precipitates remains insoluble in aqueous NaOH. फिर है आपके पास टेस्ट फॉर अमोनियम आयंस. Add aqueous sodium hydroxide and warm the solution. Observation क्या होगी? Pungent gas is given off which turns tan redness into blue. ठीक है. ये टेस्ट करने से क्या होगा? सारी की सारी अमोनिया गैस रिलीज हो चुकी होगी. सारी की सारी अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी
यानी ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। जब ये कंज्यूम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर ये नाइट्रेट आयंस के साथ जो है ना इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयंस, add aqueous NaOH and warm distance, add aqueous NaOH followed by aluminum powder and then gently heat it. Pungent gas is given off. Which turns damp red litmus into blue. Name the process used to separate ethanol from the mixture of ethanol and water. तो मिसिबल सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए हम हमेशा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ये चीज हमने पढ़ाई भी है आपको, ठीक है। State why this process is suitable, because both these compounds have different boiling points. Because ethanol and water has different boiling point. Describe a suitable method in each case to separate the named substance from a mixture. It's been your choice in each case. Pure dry sodium chloride from a mixture of sodium chloride and sand. आप जानते हैं sand insoluble in water, sodium chloride soluble. तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? Add water in a mixture and stir the solution. And stir the mixture भी कह सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? Filtrate the mixture. You filter the mixture. Sand is residue. And NaCl solution is filtrate. मैं हीट करूंगा फिल्ट्रेट को, and heat the filtrate and left the solution for crystallization. ठीक है, फिर वो आपसे कह रहे हैं a food coloring from mixture of 3 food colors. Okay, mixture of 3 food colorings हैं और अब में काम करना है। तो बेटा आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्रोमेटोग्राफी करेंगे। मार्क्स का पार्ट है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 3 फूड कलरिंग का मिक्सचर है इसका एक स्पॉट
मैं क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे लगाऊंगा। Mark a reference line with pencil. With pencil. And place spot of mixture on it. ठीक है, उसके बाद मैं सॉल्वेंट को बीकर में लूंगा या मेजिंग सिलेंडर। And put the chromatography paper in it. ठीक है, और मैं इस बात को भी मेक श्योर करूंगा कि सॉल्वेंट जो है वो स्पॉट से ब्लो रहे। सॉल्वेंट लेवल should be below the spot। ठीक है, different spots have different spots have different solubilities and so they have different RFLs। Question number 4. A student suggests a method to prepare dry crystals of hydrated copper sulfate, but some processes are missing. Measure a known volume of 0.5 mole per dm sulfuric acid into the beaker. Add a spatula measure of solid copper oxide and stir. Heat to evaporate all the water and obtain the crystals. There is a process missing between step 1 and 2. Process is missing, meaning अगर मैं कॉपर ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड कर रहा हूँ और स्टर कर रहा हूँ बीकर को, तो बीकर को हीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जेंटली, क्योंकि उन्होंने कहा है स्टेप 1 और स्टेप 2 में प्रोसेस इज मिसिंग। और क्या है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन वी नीड टू हीट। सही है, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मैं हीट करूंगा, तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा स्टेप 1 और 2 में। स्टेप 2, all the solid copper oxide disappears. State and explain what the student should do next in step 2। बेटा copper oxide को ऐड करो until no more copper oxide dissolves। Continue adding copper oxide
until it is in excess. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? There is a process missing between step 2 and 3. Identify the missing process and explain why it is important. भाई आपने कॉपर टू ऑक्साइड लिया, स्टर कर लिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या आ गया? कॉपर सल्फेट आ गया, और अनरिएक्टेड कॉपर होगा, कॉपर ऑक्साइड, तो उसको फिल्टर करोगे ना आप? Filter the mixture so that unreacted copper to oxide can be removed. Step 3 will not make crystals of hydrated copper to sulfate. State and explain how the student should change step 3 to make pure dry crystals of hydrated copper to sulfate. Beta, concentrate the solution, और solution को concentrate करने के लिए you need heating. So concentrate the solution until it is saturated. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? The solution for crystallization. और फिर उसके बाद सैंपल क्रिस्टल्स को ड्राई करते हैं ऑन द फिल्टर पेपर. ड्राई द क्रिस्टल्स ऑन द फिल्टर पेपर. सरप्राइजिंगली ये पूरा का पूरा सॉल्ट प्रिपरेशन मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, उसमें ये मैंने कॉपर टू ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की ही एग्जांपल दी है, और एग्जैक्टली ये पूरी चीज वहां पर लिखी हुई भी है नोट्स में. तो अगर आपने याद किया हुआ है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं इसको. Describe two observations the student make during the preparation of pure dry crystals of hydrated copper sulfate. For each observation, make clear at which step it is seen. Observation 1. Black solid remain. ठीक है, और ये मुझे कहाँ मिलेगा? स्टेप 2 में. क्यों? क्योंकि मैं सॉलिड कॉपर टू ऑक्साइड ऐड करके स्टर कर रहा हूँ. तो जब एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड ऐड करोगे तो फिर अनरिएक्टेड कॉपर टू ऑक्साइड आपको मिलेगा एट द बॉटम ऑफ द बीकर, और उसका कलर होगा ब्लैक, बिकॉज कॉपर टू ऑक्साइड इज ब्लैक. स्टेप 3 में आपको क्रिस्टल्स हासिल हो रहे हैं, तो क्रिस्टल्स का कलर क्या होगा? ब्लू. State a hazard involved in this preparation and a safety precaution the student should take to reduce the risk from this hazard. जाहिर बात है H2SO4 यूज कर रहे हो, it is extremely corrosive. H2SO4 is corrosive, so wear gloves and goggles. A student does an experiment to determine the enthalpy change for the displacement reaction between zinc and aqueous copper to sulfate. State what is observed during this reaction. बेटा pink brown solid appear होगा, blue solution fade हो जाएगा. blue
solution turns colorless. You have a pink brown solid appear. Weigh the sample bottle with a small amount of zinc powder. 25 cm cube of 0.05, sorry, 0.5 mole per dm2 copper sulfate in a glass beaker and record the temperature. Record the temperature, the copper sulfate at 1 minute intervals for 3 minutes. Add zinc powder to copper to sulfate at the 4th minute and reweigh the sample bottle. Stir the mixture in the glass beaker and record the temperature at 1 minute intervals for 6 minutes. The masses recorded are shown. ठीक है, ये mass of container with zinc powder, ये mass of container after zinc powder added to this. Calculate the mass of zinc powder added to copper to sulfate. So बेटा आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो 15.18 14.23. 15.18 minus 14.23, it's going to be 0.95 gram. इसके बाद वो कह रहे हैं suggest why no temperature was recorded at the 4th minute. क्योंकि आपको पता है 4th मिनट के ऊपर हमने जिंक पाउडर को ऐड किया है यहाँ पर. सही है. तो देखिए जिंक powder was added at 4th minute. Suggest why the zinc is powdered to increase the surface area so that rate of reaction increases. So that rate of reaction increases. State why the glass beaker is not the most suitable piece of apparatus for this experiment. Suggest an improvement. बेटा glass beaker जो होता है ना वो ज्यादा अच्छा जो है वो नहीं होता, heat loss prevent नहीं करता. Glass beaker cannot prevent the heat loss, so instead of glass beaker we can use polystyrene cups. Polystyrene cups आपने देखा होगा व्हाइट कलर के कप्स होते हैं जिसमें लोग कॉफी या पानी पीते हैं, पॉलीस्टाइरीन कप्स कहते हैं. और प्लास्टिक कप्स. ठीक है. Plot the values of thermometer, plot the values of temperature against time on the grid. ये मैंने plot कर दिया है. वो कह रहे हैं draw a straight line of best fit to the points from 0 to 3. तो 0 to 3 की ये best line of best fit थी. और फिर वो कह रहे हैं extrapolate this line to the 4th minute, और मैंने इसको extrapolate किया 4th minute तक. ठीक है. फिर वो कह रहे हैं draw the straight line of best fit to the point from 5 to 10 minutes. Extrapolate this line back to 4th minute. तो मैंने इसको extrapolate किया 4th minute तक, यहाँ तक. फिर वो कह रहे हैं use your extrapolated lines to determine the temperature change at the 4th minute. तो 4th minute के ऊपर यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ये कितना है आपके पास 29 point something.
ये आई थिंक सो 29.3 मिल रहा है मुझे, और यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 22.1 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो क्या आएगा टेम्परेचर चेंज, तो ये हो जाएगा आपके पास 29.3 माइनस 22.1, सो यहाँ से डेल्टा टी आ जाएगा आपके पास 7.2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिख दीजिए 7.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा कि ये फाइनल टेम्परेचर है, ये इनिशियल टेम्परेचर है, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे टेम्परेचर चेंज मिलेगा। इसके बाद कैलकुलेट द हीट एनर्जी Q इन जूल्स ड्यूरिंग द रिएक्शन, शो यूज द एक्सप्रेशन दिस। बेटा मास दिया हुआ 25, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 और डेल्टा टी आपने अभी 7.2 डिटरमाइन किया था, तो ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू 25 इंटू 4.2 इंटू 7.2, तो यहाँ से Q की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है आपके पास 756 जूल्स, ये हो जाएगा 756 जूल्स। तो इसके बाद वो कह रहे हैं the limiting reactant is copper sulfate, calculate the number of moles of copper sulfate in 25 cm cube of 0.5 mole per dm cube copper sulfate। तो बेटा 1000 cm cube में आपके पास 0.500 मोल्स होंगे कॉपर सल्फेट के। अगर 25 cm cube है आपके पास तो ऑब्वियसली मोल्स आएंगे, और मोल्स हो जाएंगे आपके पास 0.0125 मोल्स। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं यूज योर आंसर फ्रॉम B9 एंड B10 टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इन किलो जूल्स पर मोल। तो सबसे पहली तो बात ये है कि ये जो एनर्जी है ये जूल्स में है, इसको मैं किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सही है, so 1 किलो जूल्स इक्वल्स टू 1000 जूल्स। तो अगर आपके पास 756 जूल्स हैं तो बताओ कितने किलो जूल्स होंगे। 756 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गई किलो जूल्स में 0.756 किलो जूल्स। ठीक है, अब जरा गौर से सुनें, जब इतने मोल्स थे कॉपर सल्फेट के तो आपको इतनी एनर्जी मिल रही थी किलो जूल्स में, राइट। जीरो पॉइंट 0125 moles gives you how much energy 0.756 किलो जूल्स। और एंथैल्पी चेंज हमेशा याद रखना 1 मोल के लिए कैलकुलेट होती है, ऑलवेज यूज फॉर 1 मोल। कैसे पता चला, वो कह भी रहा है यहाँ पर 1 मोल है ना, वो पर मोल कह रहा है, इसका मतलब 1 मोल में कैलकुलेट करनी है, तो 1 मोल में कितनी होगी। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 0.756 डिवाइडेड बाय 0.0125, इट्स गोइंग टू बी 60.48। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं इंक्लूड एन अप्रोप्रिएट साइन विद योर आंसर। आप जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर राइज हुआ है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। फिर आपके पास है the actual enthalpy change of this reaction is likely to be greater than the value calculated in B11, suggest reason for this। आप बताइए, because of heat loss, because of heat loss। ठीक है, into this surrounding। All right, thank you very much guys, ख्याल रखिए।